Hello, my sparkling stars. Let's start with another lesson of grade 7 mathematics. This is chapter number 11. We have powers and exponents. So, before we start, हम एक छोटा सा warm up करेंगे and in this we have few questions. So, let's do them. If 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 is equal to 2 raised to the power n, यहाँ 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, that will be the value of n. So we write n as 5. And when you write a raised to the power n, तो a हमारा बेस होता है और n को हम पावर बोलते हैं. कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो, जैसे यहाँ 6 की पावर 0 है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है. And the number of 3 to the power 5, we write 3 raised to the power 5 like this. Okay, and we have to find the product form of the given numbers. So 5 raised to the power 4 है, तो हम इसको 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. यहाँ पर y multiply y multiply y. And here you'll write -4. ब्रैकेट जरूर लगाएंगे जब नेगेटिव नंबर है. Multiply by -4. Okay, and do it yourself. You have to express them in the exponential form. Count करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and we write k raised to the power 8. Now -1 raised to the power 4 is 1. जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर में होती है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. एंड 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000. सिमिलरली यहाँ पर 3 times 3 times 3 times 3, that will be equal to 81. And any number raised to the power 0 is 1. Now here we have a 4 times, b 3 times, तो x हो गया 4 और y हो गया 3. करेक्ट. नाउ वी कम टू एक्सपोनेंट्स. बेटा जब बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, अब बड़ी क्वांटिटीज कैसी, लाइक योर प्लैनेट के मासेस, एंड समटाइम वी कम अक्रॉस वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक एटॉमिक साइजेस which are really very difficult to count, even to write without using exponents. You are not able to even compare them, right? So in this chapter we are going to learn how to use exponents to express very small and very big numbers. Now children, we know that repeated addition is multiplication, and the repeated addition is easily expressed in the terms of multiplication. जैसे हमने लिखा 5 plus 5, इसका सिंपल सा मीनिंग है 2 times 5. तो हमने इसको लिख दिया 2 multiply 5. अगर 5 को 3 times ऐड किया तो हम इसको लिख देंगे 3 times 5. अब जब 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 multiply 5, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. We write it as 5 square. If it is coming 3 times, we write it 5 cube. Got it? So यहाँ base हुआ 5 and this 3 is called the power. Got it? So here power is also called with a special name, that's called exponent. अब यहाँ पर हमने लिखा 5 cube. पावर जब 3 होती है उसको एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं क्यूब. ऐसे ही अगर पावर 2 होती है तो उसको स्पेशल नेम से बुलाते हैं स्क्वायर. Now what will you call it? This is 7 cube. 7 cube का मतलब 7 multiply 7 multiply 7. Similarly, this is called 3 cubed, right? That means 3 multiply 3 multiply 3. So in general, if x is any rational number, then the product of x with itself n number of times is given as x time x time x time x n times, and we write it as x raised to the power n. तो x हुआ बेस और n हो गई उसकी पावर. We call it exponent. Now we come at these examples. First number हमें दिया है 7 square. 7 square का मतलब हुआ 7 multiply 7 which is 49. We have 2 cubed which is equal to 8. 3 cubed, that is 3 multiply 3 multiply 3, we get 27. अगर ये -3 square होगा
तो यहाँ -3 और -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, वी गेट 9. -3 cubed is -27. Similarly, -3 raised to the power 4 is equal to 81. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होता है. सी हियर, -2 की पावर 2 we get 4. एंड सिमिलरली अगर मैंने -2 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि ये नेगेटिव साइन बाहर है, तो इट हैज टू बी -4. Okay, so this answer is wrong. But if I write -2 whole square, then it will be equal to +4. And यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर किया लेकिन माइनस का साइन बाहर रखा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा and we put a minus sign. So this is a correct answer. Got it? Now moving further, हम सीखेंगे exponents of rational number. So let's say हमने नंबर लिया 2/3, इसकी पावर ली 4, that means 2/3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, we get 16/81. एक और एग्जांपल देखते हैं, -2/3 raised to the power 4, तो नेगेटिव नंबर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ and we get a positive answer. सिमिलरली अगर ये -2/3 raised to the power 3 लेते हैं, यहाँ पावर ऑड है, so your answer becomes a negative number. We'll learn about conversion into power notation. Now children, we can express numbers using exponent in different ways. अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है 729, हम इसको ब्रेक करते हैं, कैसे? 7 times 100, 2 times 10 and then 9 times 1 and they are added together. अब इस 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 की जगह इवन हम 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, बिकॉज किसी नंबर की पावर 0 1 होता है. ओके, नाउ इवन वी कैन एक्सपेंड दिस 729 as 9 times 9 times 9 and it becomes 9 cube. और अगर हम इसको दूसरी तरह ब्रेक करें तो 9 की जगह हमने 2 times 3 लिखा, सिमिलरली another 9 and another 9, यहाँ पर 3 आया 6 times, so it becomes 3 raised to the power 6. So this is how we can express any number in different ways. So any number raised to the power 1 is always the same number. कोई भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, 2 raised to the power 1 is 2, 7 raised to the power 1 is 7. And now we come to example. Write the following numbers in part notation using prime factorization. क्या करना है, हमने अपने नंबर को ब्रेक करना है प्राइम नंबर्स में बाय मेकिंग द फैक्टर्स, और फिर ऑब्जर्व किया 2 3 टाइम्स आया, हमने लिखा 2 क्यूब, और 3 2 टाइम्स आया, सो वी हैव रिटन 3 स्क्वायर. नाउ लेट्स टेक 968, इसको ब्रेक किया 2 times 2 times 2 and 11 coming 2 times, तो ये बना 2 cube multiplied by 11 square. Let's take another number 5625. यहाँ हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और 3 आया 2 times, we have written 3 square multiply 5 raised to the power 4. And this way you can do other questions. Now we come to another example. 27/1000. इस 27 को ब्रेक किया 3 3 3 और 10 10 10 बना 1000. So we get 3/10 3/10 3/10 and we write 3/10 raised to the power 3. Got it? Coming to -64/125. -64 को ब्रेक किया -4 -4 -4 and 125 को ब्रेक किया 5 multiply 5 multiply 5 and you get -4/5 raised to the power 3. तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स में भी अपने नंबर्स को एक्सपोनेंशियल पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज and you are going to solve it by your own. Come to laws of exponent. You know, जब आप laws of exponent सीख जाएंगे तो आपको अपने questions करने और easy हो जाएंगे. So there are following laws of exponent which are really very useful to do operations on multiplication and division in numbers.
Now, first law is if x is an irrational number and a and b both are whole numbers, so x raised to the power a multiply x raised to the power b is equal to x raised to the power a plus b. ऐसे ही 3 raised to the power 3 multiply 3 raised to the power 4 में यहाँ 3 को 3 times लिखा, फिर 4 times लिखा और ये बन गया 3 raised to the power 4. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम पार्ट्स ऐड कर देते हैं तो हमारा वर्क और इजी हो जाता है. सो वी राइट 3 raised to the power 3 plus 4 which is equal to 3 raised to the power 7. So simple. Let's move further. अब हमने इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल लिया. We have 2 upon 3 raised to the power 3 and 2 upon 3 raised to the power 4. And we first write down 3 times, then we write 4 times. 3 को भी 3 times लिखा, 4 times लिखा और हमने ऑब्जर्व किया हमारा आंसर आ गया 2 upon 3 raised to the power 7. Coming to second method, जो simple method है, 2 upon 3, 2 upon 3 बेस सेम है, पार्ट्स आर डिफरेंट, तो हमने सिंपली पार्ट्स को ऐड किया and we get the answer so promptly, isn't it? तो जब भी वर्क जल्दी करना हो हम laws of exponents को यूज करेंगे. Now learning about dividing numbers with same base and different exponent. So if x is a rational number and a and b are any whole number such that a is greater than b, so x raised to the power a divided by x raised to the power b is equal to x raised to the power a minus b. तो यहाँ पर हमारे पास minus 1 upon 5 raised to the power 5 divided by minus 1 upon 5 raised to the power 3. So what will you do? पहले हमने इसको 5 times लिखा divided by 3 times लिखा and we'll observe हमें result में मिलेगा minus 1 upon 5 multiply minus 1 upon 5. But अगर हम यहाँ पर second method use करेंगे using the law, simply parts का difference निकाला 5 minus 3 and we get minus 1 upon 5 raised to the power 2, which is your answer. Now coming to my notes, if I write 2 square multiply 2 raised to the power 4, powers are added, we get 2 raised to the power 6. लेकिन अगर बीच में ये प्लस का साइन है, then this is absolutely wrong. So this second operation will not work because यहाँ पर हम प्लस का साइन यूज कर रहे हैं. अब आते हैं डिवीजन पर. तो यहाँ पर 3 raised to the power 4 divided by 3 raised to the power 2, 4 minus 2 is 2, हमारा रिजल्ट आ गया 3 square. And then we cannot use this rule जब बीच में डिवाइड की जगह माइनस का साइन होता है. It is absolutely wrong. Now after this also if we use law second, x raised to the power a divided by x raised to the power b is equal to x raised to the power a minus b. So we have 3 square divided by 3 raised to the power 6, it's equal to 3 raised to the power 2 minus 6 which is equal to 3 raised to the power minus 4. अब ये पावर minus 4 है इसलिए हमने उसको 1 upon 3 raised to the power 4 लिखा. So what do you get? In general, if x is a rational number and a is any whole number, then x raised to the power a is x raised to the power minus a is equal to 1 upon x raised to the power 2. Got it? Now we come at numbers with exponents to the exponents. That's called power of power. तो यहाँ हमने लिया एक नंबर x raised to the power a raised to the power b. यहाँ दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आपको मिलेगा x raised to the power a b. Got it? अब एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ हमने लिया 3 square raised to the power 4. तो 3 square का मतलब यहाँ 3 square को 4 times मल्टीप्लाई करना है. हमने इसको 4 times लिखा और पास हो गई ऐड, तो ये बन गया 3 raised to the power 8. लेकिन अगर हम लॉ अप्लाई करते हैं 3 raised to the power 2 raised to the power 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये बन गया 8 और आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा. गॉट इट? एक और एग्जांपल 5 raised to the power 3 raised to the power 2. अब इन 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया we get 5 raised to the power 6. गॉट इट? नाउ नंबर्स विद
0 एज एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा. लेट्स सी x raised to the power 3 divided by x raised to the power 3. आपका लॉ कहता है कि इनका डिफरेंस निकलेगा और हमें मिलेगा x raised to the power 3 minus 3 which is x raised to the power 0. Got it? अब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया. x को 3 टाइम्स लिखा, डिवाइडेड बाय x को 3 टाइम्स लिखा एंड हमारा सब कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद ओनली 1. सो वी कंक्लूड कि x की पावर 0 हमेशा 1 होती है एंड वी अराइव एट द लॉ व्हिच इज गिवन. गॉट इट? तो हम इस लॉ को फॉलो करके यहाँ हमने 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर we'll get 5 raised to the power 0 which is equal to 1. Now we come at multiplying numbers with same exponent. So this is law number 5. Here if a and b are rational numbers और n कोई भी whole number है, that means a की पावर m और b की पावर m को multiply किया तो हमें मिला ab raised to the power m. Now dividing numbers with same exponent. So we have another law, law number 6. If a and b are rational numbers and m is any whole number, then a upon n, then a raised to the power m divided by b raised to the power m is equal to a upon b whole raised to the power m. And इसके ऊपर based हम example लेते हैं. 3 square divided by 5 square, तो हमें आंसर मिलेगा 3 upon 5 whole square. ऐसे ही मैंने लिखा अगर 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 7 क्यूब, सो वी गेट द आंसर 4 अपॉन 7 होल क्यूब. नाउ लेट्स कम एट माय नोट्स. तो अभी हम वो सारे लॉज रिवाइज करेंगे जो हमने अभी पढ़े हैं. x raised to the power a multiplied by x raised to the power b gives you x raised to the power a plus b. And similarly x raised to the power a divided by x raised to the power b gives you x raised to the power a minus b. Similarly, x raised to the power minus a is equal to 1 upon x raised to the power a. And x raised to the power a raised to the power b will be equal to the x raised to the power a multiply b. Any number raised to the power 0 is 1. If bases are different and the powers are same and we multiply, it becomes a multiply b raised to the power n. और same rule division में भी use होता है. अगर a raised to the power m divided by b raised to the power n है तो a upon b लिखेंगे raised to the power m. Got it? And now we are going to simplify these questions using the laws of exponent जो हमने अभी सीखी. So let's take 1 upon 9 multiply 3 raised to the power 5. So 1 upon 9 को हमने लिखा 3 square and we get 3 raised to the power 5 divided by 3 raised to the power 2 और यहाँ पर पार्ट्स का डिफरेंस आ जाएगा तो मिला 3 raised to the power 5 minus 2 which is 3 cube and we get 27. Next is 5 raised to the power a multiply 25 raised to the power b. अब बेस हमें सेम करने हैं तो इस 25 की जगह हमने 5 स्क्वायर लिखा और ये बन गया 5 raised to the power 2b. So 5 raised a, 5 raised 2b becomes 5 raised to the power a plus 2b. Got it? Now come here. Minus 4 square raised to the power 3. This is power of power. तो हमारा बना minus 4 raised to the power 2 multiply 3 and you get minus 4 raised to the power 6 which is equal to minus 4096. Next example is minus 1 upon 2 raised to the power 0 raised to the power 2 raised to the power 0. Got it? तो हम सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ये बन गया 0 and we get 1 upon 2 raised to the power 0 और कोई भी नंबर पार्ट टू 0 होता है that is equal to 1. We'll take another example 2 upon 5 raised to the power 7 divided by minus 2 upon 5 raised to the power 3. अब ये माइनस का साइन पहले हम बाहर लेके आएंगे तो हमें मिला 2 upon 5 raised to the power 7 divided by 2 upon 5 raised to the power 3 and we bring minus sign outside. ये माइनस साइन पूरे एक्सप्रेशन से बाहर चला जाएगा. 2 upon 5 raised to the power 7 minus 3 that will be equal to 2 upon 5 raised to the power 4 with a minus sign and on solving we get minus 16 upon 625.
Now let's simplify another question. 5 raised to the power 9 upon 5 raised to the power 7 multiply 5 raised to the power 6. तो यहाँ पर पार्ट्स का डिफरेंस निकला, मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 6. अब इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे एंड फाइनली वी गेट 5 raised to the power 8. And next question is again on the same pattern. So we will see यहाँ पर पावर ऑफ पावर अप्लाई हुआ, 3 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर भी 8 हो गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 की पावर 8 हो जाएगा. And here we have 6 raised to the power 5. अब दोनों bases सेम हो गए, divided by 6 raised to the power 2. So we will take 6 as a base. 8 and 5 को ऐड किया एंड यहाँ पर -2 किया क्योंकि यहाँ डिविजन है और आपको आंसर मिला 6 raised to the power 11. Take another one. Here we will first break this 16 और इस 16 को लिखेंगे 2 raised to the power 4. अब 2 की पावर्स को एक साथ लेके आएंगे 5 minus 4. 3 की पावर्स को एक साथ लेके आएंगे 4 minus 1 and 5 remains as it is. तो यहाँ मिला 2 की पावर 1, यहाँ मिला 3 की पावर 3 और यहाँ मिला 5. Got it? And we get the answer. Similarly, you can try next question. 81 को ब्रेक किया 3 की पावर 4 में, 100 को ब्रेक किया 10 स्क्वायर में. अब हमने 3 की पावर 4 minus 3 की पावर 4 में. ऐसे ही 7 की पावर 3 ऊपर है, 7 की पावर 1 माइनस है, so it becomes 3 minus 1. 7 raised to the power 3 minus 1. यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ 10 स्क्वायर, तो 10 की पावर 2 minus 2. ये भी पावर 0 हो गई, ये भी पावर 0 हो गई और हमारे पास सिर्फ बचा 49. So this becomes your answer. Got it? Now next part is very similar to it. I want you to try yourself and here comes your exercise. हमने बहुत सारे examples किए हैं. I hope the concepts are really clear to you. So now try doing the exercise by yourself. We come at scientific notation now. So children, any number can be expressed in the scientific notation of the form k multiply 10 raised to the power n. यहाँ k क्या है? K is any number which is equal to 1 or more than 0 but more than 1 but less than 10. Okay, so here we take n is any integer. Now I have a number. मैं आपको explain करती हूँ. हमारे पास नंबर है 1.2 multiply 10. It is equal to 12. तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 1.2 multiply 10 raised to the power 1. Let's take another number. हमारे पास एक नंबर है 6.23. इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 623 हो जाएगा और 623 को लिखने का मेथड है 6.23 multiply 10 raised to the power 2. अब हमने नंबर लिया 7135. हम इसको लिख सकते हैं 7.135 multiply 1000 या हम इसको लिख सकते हैं 7.135 multiply 10 raised to the power 3. And this way, you know, this notation is really very helpful when you have very big or very, very small numbers. Now, I'll give you when you come across these numbers. It could be the distance of the earth and the moon, the distance of sun and the earth, and when you want to express them, it is expressed in the form of scientific notation. Now, we'll take the example. We have this number and you have to convert it into scientific notation. हमने यहाँ पे लिखा नंबर को और फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाया. अब डेसिमल लगाने के बाद हम काउंट करेंगे कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर. एंड वी ऑब्जर्व वी हैव 5 प्लेसेस. तो हमने इसको लिखा 3.70000 multiply we have 1 followed by 5 zeros. Okay, अब इसको लिख सकते हैं 10 raised to the power 5 और इसको लिखा हमने 3.7 multiply 10 raised to the power 5 which becomes your answer. Got it? Now this way we have more numbers which can be expressed in scientific notation. So let's see. India has area of about 32,88,000 square kilometer and we can express it as 3.288 multiply 10 raised to the power 6. Now similarly,
We take a large number 70530000 और हमने क्या किया 7 के बाद पहुंचा दिया डेसिमल। तो हमने लिखा 7.053 मल्टीप्लाई 1 के बाद 336 एंड 2 8 zeros। 8 zeros क्यों आए? क्योंकि इस प्लेस के बाद ये 8 digits हैं। Got it? And it can be written as 7.053 multiplied by 10 raised to the power 8. Okay, 0 will come here. Correct? Now similarly, इस नंबर को रीड करना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम इसको इजी बनाएंगे। हमने यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाया और काउंट की कितने प्लेसेस हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11। So we are going to write 6.502 multiply 10 raised to the power 11. So simple. Now when you come across small numbers, how to write them in exponent form? अगर हमारा नंबर है 0.1, हम इसको लिखेंगे 1 multiply 1 upon 10 which is equal to 10 raised to the power 1 minus 1. Similarly अगर 0.25 है तो हम इसको लिखेंगे 25 multiply 10 raised to the power minus 2. Right? अगर हमें एक नंबर दिया है 3 millimeter and we convert it into meters तो हम लिखेंगे 3 upon 1000 meters और 3 upon 1000 का मतलब हुआ 3 multiply 10 raised to the power minus 3 meters. Okay? And this way if you convert millimeter into kilometer, so you are going to multiply 1000 and 1000 and divide 5 by it. So this becomes 5 multiply 10 raised to the power minus 6 kilometers. Correct? And here we have an exercise based on the same questions जो हमने अभी examples में। So please try doing them and we come to the MCQ part and the closing of the chapter. The values of x and y, if x raised to the power y is equal to y raised to the power x are x equals 2 and y equals 4. क्योंकि अगर 2 की पावर 4 लिखेंगे तो भी 16 आएगा और 4 की पावर 2 लिखेंगे तो भी 16 आएगा। Interesting fact. And if p and q are integers and p and q are not equal to 0, then the reciprocal of p upon q raised to the power n. So one thing is when you write p upon q raised to the power n, इसका reciprocal हो जाएगा p upon q raised to the power minus n. So it will be your answer, p upon q raised to the power minus n. Now here 3 upon 8 raised to the power 4 raised to the power minus 2. यहाँ powers of powers है तो powers multiply हो जाएंगी. So we'll write 3 upon 8 raised to the power minus 8. And here 5 raised to the power m is equal to 625. So m is equal to 4 because 5 raised to the power 4 will be 625. Now last question you are going to do yourself and enjoy whatever you have learned. तो आपने बहुत कुछ सीखा पावर्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में. I hope you enjoyed it. Now we'll be meeting again with the next video. Till then, stay elated. Goodbye.